Hello guys, welcome back to MC Academy. Today we are going to discuss the most important adjectives followed by prepositions. In our last lesson we learned the most important verbs followed by prepositions, जिसमें हमने कुछ ऐसे verbs पढ़े थे जिनके साथ हम कुछ मखसूस preposition इस्तेमाल करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कुछ adjectives जिनके साथ हम कुछ मखसूस preposition इस्तेमाल करते हैं। वाज़ेह रहे कि इन adjectives के साथ मुख्तलिफ situation में मुख्तलिफ prepositions भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन हम वो common situation पढ़ेंगे जो ज़्यादातर MCQs टेस्ट में रिपीट होती हैं। बिला ताखीर चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सबसे पहला एडजेक्टिव है accustomed, which is always followed by preposition to. Accustomed to means आदी हो जाना, जिसका सेंटेंस है he is accustomed to very cold weather. नेक्स्ट एडजेक्टिव है acquainted with. Acquainted means वाकफियत होना या जानना, जिसके साथ हम preposition with इस्तेमाल करेंगे। For example, I am not acquainted with her. नेक्स्ट afraid of मतलब डरना या खौफ में होना। For example, the child is afraid of thunder. नेक्स्ट एडजेक्टिव affectionate, which is followed by preposition to. Affectionate affection का एडजेक्टिव है जिसका मतलब है प्यारा होना। Example, the dog is very affectionate to his master. नेक्स्ट एडजेक्टिव alarmed at. For example, everyone was alarmed at the news. और अमेज्ड के साथ भी हम एट ही यूज़ करेंगे। आई एम अमेज्ड एट हर इल मैनर्स। मैं इनको थोड़ा जल्दी कवर करता जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो आपने सिर्फ समझते जाना है कि कौन से एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ हो रही है, और एग्जाम्पल्स में थोड़ा सिचुएशंस को देखते जाना है ताकि आप थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव एंग्री विद। यहाँ पर याद रखिएगा एंग्री विद समबॉडी, एंग्री एट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट एंग्री विद मी। यहाँ पर मी पर्सन है इसलिए हम विद यूज़ करेंगे। अगर मैनर्स, हैबिट्स या बिहेवियर होता तो हम एट का इस्तेमाल करते, जैसे ही गॉट एंग्री एट माई बिहेवियर। नेक्स्ट annoyed at. एग्जाम्पल, द टीचर वॉज annoyed at द बॉयज बिहेवियर। नेक्स्ट anxious about यानी परेशान होना या बेताब होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी anxious about her health. नेक्स्ट ashamed of. एग्जाम्पल, he was ashamed of himself. नेक्स्ट एडजेक्टिव astonished at. Example, all were astonished at his abusive language. Next, aware of. I'm not aware of the danger. Next, blind in. The beggar is blind in his right eye. जब हकीकत में कोई बिनाई से महरूम हो तो हम blind के साथ in का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई नज़रअंदाज करे या देखते हुए भी उसको पता न चले तो हम blind to इस्तेमाल करेंगे। For example, he is blind to the sense of color. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। born के साथ हम preposition of यूज़ करेंगे। For example, कायद आज़म was born of very rich parents. Next, bound for. The ship is bound for Indonesia. Adjective busy के साथ हम with यूज़ करेंगे। He is busy with his work. Capable mostly takes off. For example, I am capable of doing this work myself. Next, careful about. For example, be careful about your health. Next adjective है certain of. For example, I am certain of his loyalty. Next, charged with. Example, he was charged with theft. Next, condemned to. For example, he was condemned to death. Next, confident of, जिसका example है he is confident of his success in PMS exams. Next, conscious of. For example, I am conscious of a change in him. Next, contrary to, यानी तजाद होना, जिसका example है this is quite contrary to your promise. Next adjective, deaf to. Example, he was deaf to my arguments. Next, deficient in यानी कमी होना, milk is deficient in iron. Next, delighted at. For example, he was much delighted at the news. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आपने सिर्फ एडजेक्टिव्स के साथ प्रीपोजिशंस को देखना है और सेंटेंस के अंदर सिचुएशन समझनी है। और अगर आप चाहें तो एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास भी रख सकते हैं, जो आपको रिवाइज करने में काम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिजायरस ऑफ। देखिए इसको सेंटेंस में, ही इज वेरी डिजायरस ऑफ प्रेज। नेक्स्ट, डिफरेंट। डिफरेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम। For example, my book is different from yours. Next adjective है disgusted with. For example, I am much disgusted with this book. Next, exempted from यानी बाहर निकाल देना। For example, the principal exempted the boy from the school. Next, engaged in यानी मसरूफ होना। Example, I am engaged in writing a book. नेक्स्ट, डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड ऑफ का मतलब है बगैर किसी चीज़ के, जिसका एग्जाम्पल है ही इज़ डिवॉइड ऑफ एनी एम्बिशन। नेक्स्ट, फेमस फॉर। फॉर एग्जाम्पल, सियालकोट इज़ फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स गुड्स। नेक्स्ट एडजेक्टिव, फेथफुल टू। For example, be faithful to your country. Next, false to. Example, never be false to your friends. Next, familiar with. Familiar with, acquainted with almost synonyms हैं। Example, I am familiar with this kind of difficulty.
Next, fit for. For example, he is quite fit for army. Next adjective, glad at. For example, we are glad at your success. Next, good at. He is good at maths but bad at biology. Bad और good दोनों के साथ ही हम preposition at यूज करेंगे और good के साथ हम preposition for का भी यूज कर सकते हैं, जैसे this dog is good for hunting. वाज़ेह रहे कि इन adjectives के साथ भी prepositions आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं करनी, पहले सेंटेंस की सिचुएशंस को देखना है जो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, जिसके बाद ही मुनासिब प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना दुरुस्त रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। ग्रीडी ऑफ, फॉर एग्जांपल ही इज नॉट ग्रीडी ऑफ वेल्थ और फेम। नेक्स्ट एडजेक्टिव, गिल्टी, विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय ऑफ। एग्जांपल, द बेगर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट, इग्नोरेंट ऑफ। एग्जांपल, आई एम येट इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट्स अबाउट द एक्सीडेंट। Next adjective, ill with. For example, I am ill with fever. Next adjective, indebted, which always takes preposition to. For example, he is indebted to you for your help. Indebted का मतलब है मकरूज होना। देखिए एक और adjective, indifferent to, जिसका मतलब है लाताल्लुक होना। For example, a teacher must not be indifferent to the difficulties of students. Next, injurious to. Alcohol is injurious to health. Next, lame in, जिसका मतलब है लेग से माजूर होना। Example, the beggar was lame in the left leg. Next, lost to. For example, how can I be lost to a sense of honor? Next, moved by. For example, I was greatly moved by the story. Moved के साथ हम preposition with भी use कर सकते हैं, जैसे I was moved with pity to see the miserable woman. Next, necessary to. Example, sleep is necessary to health. Next adjective, negligent in. For example, the boy has often been negligent in doing homework. I hope it's clear up to here. Let's move to the other adjectives. Obliged to. For example, I am obliged to you for your help. Obedient के साथ भी हम preposition to use करेंगे, जिसका example है Shan was obedient to his parents. Next, occupied by. Example, all the front seats are occupied by the guests. Proud के साथ हम preposition of use करेंगे, we are proud of our beloved country. Next adjective, popular, which is followed by with. Example, he is popular with his students. Next, proficient in, जिसका example है he is proficient in English. अगर proficient की जगह हम good use करेंगे तो हम इनकी जगह at का इस्तेमाल करेंगे। Next, quick is also followed by at. For example, he is quick at mathematics. Next, serviceable to. Example, this raincoat is serviceable to you in rainy season. Shocked at. For example, I am shocked at his behavior. देखिए एक और example, short of. Are you short of money these days? Next, slow of. For example, he is slow of hearing. Sure should also take off. Example, he is almost sure of success. Next, sympathetic with, जिसका मतलब है हमदर्दी होना। देखिए इसको सेंटेंस में, I am very sympathetic with the refugees. Last adjective, tired of. For example, I am tired of this kind of work. यहाँ पर adjectives followed by appropriate prepositions का लेक्चर मुकम्मल होता है। इससे पहले हम 50 verbs डिस्कस कर चुके हैं जिनके साथ कुछ मखसूस preposition इस्तेमाल होती हैं, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आने वाले लेक्चर में हम ऐसे नाउन्स पढ़ेंगे जिनके साथ मखसूस preposition इस्तेमाल होती हैं। और ये तीनों लेक्चर्स किसी भी MCQs टेस्ट में prepositions अटेम्प्ट करते हुए बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है आप सब इनसे फ़ायदा हासिल करेंगे। Stay tuned. Thank you for watching MC Academy YouTube channel.